How is it now? Rishita? Hello. Rishita, how is it now? Sir, it's still breaking. Fast internet भी है, speed to 13 Mbps is fine. How is it now? I feel it is bad. Or is it getting a bit better? Yes, sir, it's getting better. So write the fourth reaction that we have seen. So we have seen that few reactions. So last case, हम लोगों ने एक reaction देखा था, that is the reaction with HX. Second and third reaction is reaction with phosphorus and reaction with halide. Both of these are in halogen halogens. तो वहां से कॉपी करना, तो फोर्थ रिएक्शन जो आपको पढ़ना है, the cleavage of COH bond is acid dehydrate. Acidic dehydrate. Acidic dehydration देखिए बहुत ही आसान है. You have carbon atom. There are two groups attached to it. Another carbon atom. There are two groups attached to it. There is one hydrogen here. There is a OH bond. ठीक. उसके बाद in acidic medium, if you heat it, then a certain temperature that is required. तो आपको बताएंगे. What is going to happen when you heat it? Water is going to leak. So from the alpha carbon, this is the alpha carbon, OH will leak. Adjacent to alpha carbon, we have beta carbon. From the beta carbon, hydrogen will leak. And you will get carbon, double bond carbon, and the two groups will be attached as it is. Okay, plus you will get H2. Since we are getting H2, we are going to call it dehydration. So what is happening in this reaction? What are the bonds breaking? आपका सबसे पहले क्या हो रहा है? CH, COH और CH bond break हो रहा है. COH and CH bond, both of these are breaking. And there is a C double bond C pi is involved. So first of all, you will write everything as it is without the OH and H. You know, you remove the H and OH और उसके बाद क्या कीजिएगा उसमें डबल बॉन्ड डाल. ठीक है, और मेक सेंस चलिए ऐसा सर. ठीक है, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन. अगर आपको याद हो, आलू एल्कीन से भी ऐसी रिएक्शन हुआ था. So please write it. Alcohols with at least alcohols with at least one alpha hydrogen. At least one alpha hydrogen reacts with protic acid. ठीक है, these words are important. Protic acid होता है क्या? Protic acid क्या है? H2SO4. For example, H2SO4. You can also use something as H3PO4, but H3PO4 sometimes it is not very favorable for the product. सारी चीजें बताएंगे. But you have to use bigger acid. HCl नहीं use कर सकते. If you are going to use HCl, then alcohol will react with HCl, जो कि last class में हम लोग पढ़ा था, Lucas वाला reaction हो जाएगा. It will give you haloalkane. So you have to use some bigger type of alcohol. H2SO4 and H3PO4 are mostly to form
form alkene via beta alkene. Via beta alkene. Two things happen here. First of all, OH bond is removed from alpha carbon. Hydrogen, otherwise not like OH bond. The OH is removed and hydrogen is removed from beta carbon. लास्ट चीज जो होती है क्या होती है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड between alpha and beta carbon. Let me know what's going on. So this is very good. The voice is So your voice yes, is Rishita, like, voice is clear. yes, sir. I can understand, but sometimes it goes breaks, but that's fine. Manage for just today and next time. Zaina, we have just started. Zaina, again you are late. Zaina, please come on time. Done, guys. So, Zaina, if you are can you please take a screenshot for this mechanism जब दिखाएंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना? Just let me know once you are done. Take the screenshot. I will give you just 5 seconds for a screenshot. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. ठीक है? Hopefully you have taken a screenshot, Zaina. माइक ऑन कीजिए भाई कम से कम. आपके क्लास में राइट हैंड कैंसल. Mechanism I'm going to take ethanol, that is CH3, CH2, OH, in the presence of H2SO4 and heat. What's going to happen? So we have only one beta carbon, so there is no confusion. You can write CH2. Hydrogen will be removed from the beta carbon. From the alpha carbon, you will have the OH. You will have CH2, CH2, and then you will have a double bond. Okay. Basically, a reaction हो रहा है. What are the different steps? Step number 1 is the protonation of carbon. Protonation of carbon. In this step, the CH3, CH2, OH it attacks the H plus that is given out by the acid. And we get a protonated alcohol, which is CH3, CH2,
positive, and there are two negatives with the positive charge. Okay, with the positive charge. The next step, step 2. Sir, can you This is scroll for up one second? Okay, sir. this step 2. What happens is formation of carbon, formation of carbon. ठीक है, अभी देख लीजिए बेसिकली है ना, अभी लिख के बाद आप छोड़ दीजिए. So you have CH3, CH2, and then you have OH and H. Right? The positive charge. This bond breaks and water is left out like CH3, CH2, positive. Rest you will get H2. Rest you will get H2. So once we have found the carbon, then there is a removal of beta proton. There is a removal of proton from the beta carbon. The beta proton. Step number 3 is removal of hydrogen from beta carbon. ठीक है, ध्यान से सुनिए जरा. It's quite important. ठीक है, I hope you have left your pen. This H plus will have something negative, right? Which is the negative counter ion. So that counter ion, it actually attacks on the hydrogen that is connected here. So you'll have carbon, there are 3 hydrogens. Single bond, CH2 positive. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, this hydrogen gives out its electron like this. So ये अपने आप तो नहीं देगा, but it can happen for a millisecond and then it becomes an alkene, CH2 double bond CH2, which is much more stable than a carbon. Also, it is facilitated by the negative counter ion of H plus that attacks on hydrogen and abstracts it. Now we can accept this hydrogen, we can write it like this H plus. This will be reused in the reaction. That is why H plus it is acting as a catalyst. Catalyst. Okay. In this case, by the way, even 1 degree is going to form a carbocation. So why it's 1 degree forming a carbocation? Because we are heating it. अगर हीट नहीं करते ना तो फिर यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनाता. ठीक है, फिर प्लीज कॉपी दिस डाउन. Raise your hand once you're done. Zaina, are you there? Zaina, आप हैं क्लास में? Yes, sir. Sir, waiting for you. Yeah. Now there are going to be a few remarks. By the way, this can be also important. Yeah, as it is, बहुत बार क्वेश्चन से पूछा गया है. ठीक है. What is the? They have asked in this particular format. Write the mechanism of dehydration of the mechanism for. Please write in remarks. Dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol occurs via formation of carbon. Formation of carbon. Therefore, we can say
rate of decline. Rate of dehydration क्या होगा? 3 degree will be fastest, followed by 2 degree, followed by 3, followed by 4. Now, since the 3 degree and 2 degree, these are what? These are going to be very reactive, very fastly reactive. That is why they can give the dehydration reaction even at low temperature. Since 2 degree and 3 degree are very reactive, words are very reactive to dehydration. They show reaction. They show reaction even at lower temperatures. Okay? So lower temperature and even milder acid. Yeah. For example, if I have a 2 degree alcohol like this, so for 2 degree alcohol, I just need to use 85% HCl. Temperature that is needed is approximately 450 or 440 Kelvin, and you will get 2 carbon atoms against it. Similarly, if I have something like this, then I have 30% and 20% HCl, even 20%. The temperature that is needed is somewhere around 360 से थोड़ा कम होता है 350. That's the temperature. So you will have 3 carbon atoms. है ना? That's this carbon. Take a look. Next point we'll write. Alkene is formed via Sage via a hydrogen is removed from that beta carbon which has less number of hydrogen. Basically क्या OH का alpha carbon से निकालना है. Hydrogen is removed from that beta carbon which has lesser number of hydrogen. Has lesser number of hydrogen. Zaina, do you know the Sedgwick rule? जी Zaina बताइए. Zaina, do you know the Sedgwick rule? आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो हेलो. So, Yes, Zaina. sir, I can't hear you. Your voice is breaking. How about now? It's still breaking. No, sir. It's been breaking for me since the beginning of class. I could hear you now when you were explaining this, but So I'm asking, do you know the Sedgwick rule? so Do you know this rule? Sedgwick rule. yes, sir. Okay. Yes, sir. So I'm giving you guys questions. Write the major rules.
एक H2SO4 ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, देखिए जरा, you have this as the alpha carbon, this one is beta carbon, the adjacent to alpha, here also we have beta. आपके पास दो बीटा, both of the betas are different है ना, this beta, so beta 1 लीजिए, beta 2 लीजिए, beta 1 and beta 2 are they different? Yes, they are. Beta 1 is not attached to any carbon atom other than alpha. Beta 2 is attached to one carbon atom. ठीक है, the number of hydrogen देख लेते हैं हम यहाँ पे, number of hydrogen in the case of beta 1 will be how many hydrogens? 3 hydrogen. In beta 2 how many hydrogens will be there? Tell me guys. How many hydrogen in beta 2? Two. जोर से बोलिए, साफ साफ बोलिए, माइक ऑन करके, नॉट हियर दैट. How Two many hydrogen. hydrogens? 2 hydrogen. तो है ना, आपको दिख रहा है 2 हाइड्रोजन? साइना Yes. दिख रहा है आपको? ठीक. So you will write everything as it is apart from the OH. OH को हटा के तो कुछ लिख दो. उसके बाद अल्फा और उस बीटा के साथ whether which beta will make it will be remove the hydrogen from beta 2 से remove करना है because it is having less number of what hydrogen. यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड लगा. बात समझ में आ रही है? आ रही होगी बात, है समझ में? चलिए देखिए अगला सवाल. जैसे मान लीजिए if you have something like this 1 2 switch. Now, if you look at the betas, this beta is beta 1, this beta is beta 2. Beta 1 and beta 2, both of them are same. Beta 1 is attached to the alpha carbon, beta 2 is also attached to the alpha carbon, beta 1 is attached to a CH3, beta 2 is also attached to CH3. That means both of them are same. कहीं से भी remove कर दीजिए हाइड्रोजन को, वो इसको हटेगा ही, इसको हटा दिया आपने, तो बॉन्ड यहाँ पे लगा दीजिए. मेक सेंस? इस दोनों फीचर नहीं, रिश्ता एंड जायना. So for the first one, wouldn't the double bond come by beta 1? Because then we would have, for major product, we would have more like alkyl groups if we put it on the other side. मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला आपको याद है? we get the more substituted alkene, ऐसे याद है आपको? ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं आप. Yes, sir. ठीक है, Yes, ध्यान से sir. आप आंसर कीजिएगा. One alkyl group here, ना? This double bond is having how many alkyl group? One alkyl, correct? Alkyl. Yes, How many sir. alkyl groups? One alkyl group. But here we are having two alkyl groups. हाँ, so it is major. क्या ख्याल है? So, I mean, it'll be both sides will be considered. यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो आपके पास CH2 है ना बस. इस कार्बन के पास तो कोई alkyl ग्रुप नहीं है. Yes, sir. ठीक है, remember this rules है ना. Remove hydrogen from that beta carbon which has lesser number of hydrogen. Which is having lesser number of hydrogen, beta 2. तो वहीं से डबल बॉन्ड बनेगा. ठीक है. Yes, sir. अरे भाई को ट्वेल्व फिफ्टी नाउ क्वेश्चन, सवाल नहीं है, आपको आंसर करना है. देन यू सेंड द आंसर्स ऑन व्हाट्सएप. फॉर एग्जांपल वी हैव समथिंग. तो बाय द वे यहाँ पे वही है आपके पास एचटीएस पूरा है. एचटीएस पूरा तीन सवाल जल्दी देखिए.
Zaina waiting for your आपको ना एक दिन बार बार कहा है make everything as it is without which कम से कम ये ना सही से देखिए make everything as it is apart from which have to done it like that बताइए ऋषिता Yes, sir, that's what I did. that's what you get look at the old question look at the reactant and the product reactant में जो भी चीजें हैं सारी चीजें हैं प्रोडक्ट में which छोड़ दीजिए उसके अलावा you think is there similarly look at the question also देखिए और बताइए Zaina do everything once again. See how I have done. I identified the alpha carbon, then I identified the beta carbon, then I wrote the number of hydrogens of the beta 1 and the beta 2. Then I made the double bond. Okay? The beta carbon is going to have lower number of hydrogens. That is going to get the double bond. Okay? Do it like that for both of these. All of them. 3, 4, and 5. तीनों के लिए दोबारा कीजिए जाएगा रिश्ता So, you find it exactly ठीक है ना बताइए sir, it's that I can't hear you. Which one should I reach out? I'm asking you Rishita, am I audible? Sir, I cannot make out your voice. Not understandable. Is there a lot of disturbance or the disturbance है या फिर voice break हो रहा है ठीक है how is my voice now is it any better Yes, sir. हम आपसे कह रहे हैं रिश्ता how did I do हमने तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया ना आपके लिए I wrote I identified the alpha carbon then I identified the beta 1 then I identified if there is any beta 2 then I compared how many hydrogens in beta 1 how many hydrogens in the beta 2 then the beta carbon with less number of hydrogen वहां पे डबल बॉन्ड बनाना है राइट जायना करेक्ट है Yes, sir. so you have to do it like that because your fourth question is wrong Okay. you do it step wise तब सही आंसर आ जाएगा ठीक है you don't need any other information यहाँ पे है ना अब अगर हम आपको कुछ बताएंगे ना then I would be telling you the complete answer and I don't want to do okay, Rishita did you can you identify your mistake Rishita आप बताइए Sir, didn't I do it on the like the carbon with less hydrogens? नहीं सुनो तो आप डबल बॉन्ड छोड़ दो आप keep your mic on first ना ऐसा mic on क्यों जाता है Yes, sir. what we need to do make everything as it is without the OH पहले तो ये करना है ना निश्चित ये सुनो डबल बॉन्ड तो बाद में हम लोग देखेंगे ठीक है Yes, sir. मेक एवरीथिंग क्या बोला हमने दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज मेक एवरीथिंग एज इट इज विदाउट OH Make everything as it is without the OH.
Look at the fourth question. रिएक्टेंट देखिए और प्रोडक्ट देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कुछ छूट गया है? OH तो आपने हटा दिया, कुछ और भी हटा दिया शायद आपने, देखिए जरा, CH3? हटा दिया है ना आपने? Yes, sir. वो हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था, ये बताइए। आपने जानबूझ के हटाया या फिर वो मिस हो जाता है आपसे? No, sir, I didn't see it. I mean, I saw it in the product side, but I forgot to add it in the रिएक्टेंट reactant. उल्टा उल्टा बोलना है आपको, सॉल्ट इन द रिएक्टेंट साइड, फॉरगॉट ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो आप फॉरगेट, हाउ कैन यू फॉरगेट इट? फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? मेक एवरीथिंग एज इट इज विदाउट इट। सेम सिमिलर मिस्टेक वी हैव डन इन द फिफ्थ वन आल्सो। देखिए, अब फिफ्थ में तो आपने पता है डबल बॉन्ड कहाँ ही लगा दिया है, अल्फा बीटा पे तो ध्यान रखिएगा ना रिश्ता, कितना टाइम भी लगना चाहिए, बिकॉज वी हैव डन दिस ना रिश्ता पहले भी, इसी तरह की मिस्टेक आपके पहले भी थे। जी, सही। Yeah, sir, it's supposed to be one carbon above. I put it in the below one. हाँ, ये ऐसे मिस्टेक्स तो मतलब बहुत अफसोस होगा आपको ना। सही सोचिए, Yes. थोड़ा सा मिस्टेक है ये, डबल बॉन्ड यहाँ से वहां कर दिया आपने, बट अगर आप इसको सोचे कि एग्जाम में अगर आप यही करके सब कुछ जानते हुए, ठीक है जायना, आपको मिस्टेक समझ में आया फोर्थ वाले में? जायना, डिड यू अंडरस्टैंड द मिस्टेक इन द फोर्थ वन? I sent you my answer. हाँ ठीक है, बस। हाँ, आपको मिस्टेक समझ में आया ये बताइए। सही आंसर देखिए, आंसर तो आपका ना हर सवाल का अलग आएगा, लेकिन प्रोसेस सब में सेम है। करेक्ट है जायना, ये सब द प्रोसेस इज सेम इन एवरी क्वेश्चन ना। Yes, sir. So that's where I'm going to focus. You understood the process, and then with that process, your answer is, you understood, no? The change in the answer, है ना? ठीक है, that's it. Yeah, your answer is also correct. And more importantly, you understood how to do Yes, sir. it. And all, चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जरा। So here we have one alpha carbon, here we have beta one, here we have beta two. But both the beta two, beta one and beta two, both of them are same order. So I will write everything as it is without the OH and add a double bond here. Similarly, if I look at this carbon atom, this is alpha carbon, this beta 1, this beta, this now beta 1 is going to have two hydrogens, beta 2 is going to have one hydrogen. Beta 2 is having lesser number of hydrogen, that is why I'm going to make the double bond there. First of all, I will make everything as it is without the double bond. Sorry. First of all, I will make everything as it is without the OH. और CH3 यहाँ पे आ गया, and alpha और beta में। फिफ्थ वाले में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान जो रखना है, वो क्या ध्यान रखना है देखिए जरा। इसमें अल्फा कार्बन, इसमें बीटा, बट इस बीटा को ना कंसिडर नहीं कर सकते भाई, बिकॉज इट इज हैविंग जीरो हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, जीरो हाइड्रोजन है, हाउ कैन वी रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम देयर? If we have zero hydrogens, then how can I remove the hydrogen from there? So that is why we are not going to consider this particular step. ठीक है, उसके बाद the only beta carbon that is left is this one. ठीक है, so this beta, so I will make everything as it is without the OH. This CH3 will be as it is, है ना? CH3 को then CH3 will be as it is. OH हटा दीजिए, यहाँ पे आपको कॉपी कीजिए। लिख लिया आप लोगों ने, कर लिया, आगे बढ़े। Yes, sir. राइट द फिक्स रिएक्शन, राइट द फिक्स रिएक्शन।
oxidation of alcohols. Oxidation of alcohol. यहाँ पे देखिए क्या होगा, you are going to do the oxidation, and that involves the cleavage of carbon, hydrogen, and the carbon, hydrogen, and the carbon have carbon, and here we are going to have some group reaction. ये आपके पास दो ग्रुप attached होंगे, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बेटा एक वन हाइड्रोजन लगा हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन, उसके बाद लगा हुआ यहाँ पे. What happens in the oxidation of alcohols? These two bonds are going to break. A bond break करेगा, carbon double bond make sense है दोनों की. ये CH Yeah. और OH, both of these are going to break, and C double bond. If you look closely, we are removing two hydrogen atoms. We can call it free hydrogen. Yes, aka free hydrogen. AKA free hydrogen. The formation of product, what product is going to get formed? C double bond होगा, that is going to be carboxylic acid. जब किस टाइप का प्रोडक्ट बनने वाला है, it's going to depend on the alcohol and the oxidizing agent. तो क्या the formation of product, the formation of product depends on alcohol and the oxidizing agent. Oxidizing agent. I hope you are writing with me. उसके बाद आपको थोड़ा देर पॉज लेना पड़ेगा. So this part is very important because it is going to be used in next chapter, that is aldehyde and carboxylic acid. Okay. Oxidizing agent can be categorized into two categories. So those types of oxidizing agent. Now, there are oxidizing agents which are strong oxidizing agent, and the others are known as weak oxidizing. तो आपके पास है strong and weak. Right here, strong oxidizing agent. What are strong oxidizing agent? Number one, aqueous soap, या फिर आपके पास alcoholic soap, या फिर आपके पास acidic soap. ठीक है, and alcohol or aqueous or acidic KMNO. Okay, in all of these medium, the KMNO4 is going to act as oxidizing agent and a strong oxidizing. Second है आपके पास acidic A2Cr2O7, acidic A2Cr2O7, या फिर आप यूज कर सकते हैं Na2Cr2O7. थर्ड नंबर में HNO3, ये बहुत ज्यादा आपको इस्तेमाल में नहीं दिखेगा दिस क्लास एट लीस्ट.
Fourth thing है आपके पास bromic acid. Bromic acid, you will see this in the next chapter. Bromic acid क्या होता है? H2CrO. Now there is a range of mild या फिर weak oxidizing agent को बोला जाता है mild या weak oxidizing agent. ठीक है, आपको नाम पे बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान देना है. जैसे इसमें जैसे नाम पे ध्यान देना, पॉलिन रिएजेंट जो है ना, इसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट. पॉलिन रिएजेंट क्या होता है? CrO3. ठीक है, ब्रोमिक एसिड ना मतलब पॉलिन रिएजेंट से ही बनता है. एंड देन we have pyridine. What is pyridine? 2 moles of C5H5. सेकंड में है आपके पास ECC. अब ECC is an important name. The full form is not very important. The full form is pyridinium fluorochrome. Pyridinium, pyridinium fluorochrome. अच्छा, now the formula for this is CrO3 dot C5H5 and dot X. ठीक है, अब इस फॉर्मूला ये तो कभी नहीं पूछ सकते. ठीक है, फॉर्मूला कभी. Then we have a very simple one, that is PDC, pyridinium dichromate. PDC, pyridinium dichromate. pyridinium dichromate में आपके पास C5H5 NH2 पॉजिटिव होता है. तो है तो पॉजिटिव आ जाएगा. And bromate which is dichrome Cr2O7. Cr2O7. ठीक है. Now, the pollen period GCC PDC is ज्यादा important है rather than their full forms and their structural form. Whatever form. Please copy this down. Raise your hand also. Waiting for Rishita. यहाँ पे आपको थोड़ा देख लीजिए पहले, उसके बाद देखिएगा ना. डोंट राइट. If you have 1 degree alcohol, that is RCH2OH, and we are going to treat this with deep oxidizing agent. तब आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड. दैट इज R. ठीक है ना, इस कार्बन से देखिए आपको हाइड्रोजन निकाल देना. एक हाइड्रोजन निकालिए तो कितना हाइड्रोजन बचेगा? एक हाइड्रोजन बचेगा. और उसमें ऑक्सीजन है, उससे भी हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो ऑक्सीजन बचेगा एंड देन डबल बॉन्ड. ठीक है, इट्स द सेम थिंग जो मैंने समझाया था. this aldehyde, in this aldehyde, if you are going to add a strong oxidizing agent, यहाँ पे क्या बन जाएगा? R C डबल बॉन्ड O एंड कार्बोक्सिल. अगर आपने इसमें क्या किया, if you are going to add a strong oxidizing agent directly, अभी तो देख रहे होंगे आप, दिख नहीं रहे. Don't try. If you're going to add a strong oxidizing agent directly, then what is going to happen to primary alcohol? The 1 degree alcohol will get directly converted to carboxylic acid. ठीक है.
क्या यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग oxidizing agent. What will happen? The 1 degree alcohol, the primary alcohol, will get directly converted to carboxylic acid. तो ये रही बात, अगर you have 2 degree alcohol, that is carbon with one hydrogen, it is bonded to OH, and this carbon is attached with two alkyl group rings. इसमें if you are going to use oxidizing agent, generally weak oxidizing agent use किया जाता है, but even if you use strong oxidizing agent without heat, अगर आप heat नहीं कर रहे हैं, then it is going to give you K2. R will be as it is, the carbon will be as it is, R will be as it is, the oxygen will be as it is. The hydrogen from carbon, the hydrogen from oxygen will go away, dehydrogenation, and then you will get a bond. क्या मिला यहाँ? This is थोड़ा इसको और डाल देते हैं. Right? What is this? This is your 1 degree alcohol, primary alcohol. 1 degree alcohol. This is your aldehyde. And this is carboxylic acid. Carboxylic acid. This is 2 degree alcohol. And this is इसे कॉपी कीजिए. इसके बाद एक दो नोट्स लिखना है. 3 डिग्री के साथ क्या हो? व्हाट विल हैपन विद 3 डिग्री? Raise your hand once you're done. Waiting for Rishika. Time now. Marks you know that's good. Oxidation of 3 degree alcohols. It's very good. Oxidation of 3 degree alcohols is very difficult. Due to the absence of alkyl, the absence of alpha hydrogen. अगर alpha hydrogen नहीं है, then what's going to happen? You will have only alkyl groups there. Carbon forms very strong. You cannot make it very. Can we oxidize them? Yes, obviously we can oxidize them, but we have to use acidified KBCr27 or KMnO4, that is strong oxidizing agent, as item. 3 degree alcohols can be oxidized. Like K2Cr2O0. Acidic substitution.
acidic or chemical or chemical. Now we answer the chemical at high temperature. What will happen when you are to high temperature? There is multiple carbon bond will break, which will give you a mixture of ketones and carboxyl. High temperature. As a result, multiple carbon bond broken, and we get a mixture of ketones and carboxyl. I hope this is self-explanatory. आपको समझ में आ गया होगा. Raise your hand once you're done. Waiting for Rishita. Right. Next, that is sixth reaction. Reaction with hot. इसको लिखते जाइएगा. Very बहुत आसान से reaction. Whatever we have seen till now, उसी की तरह. If I have primary alcohol, ठीक है. और इसमें अगर आपने क्या किया, copper at 573 Kelvin, then you will get an aldehyde. Example के तौर पे, if I have 1, 2, 3 carbon atoms, then I have a OH. यहाँ पे आपने क्या copper at 573 Kelvin. ठीक है. So what will happen? 1, 2, 3 carbon atom और तीसरे कार्बन पे CHO ऐसे है. Don't take 4 carbon atoms. Don't take just 3 carbon atoms. Plus यहाँ पे क्या होगा? You will get H2. ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन और कार्बन वाला हाइड्रोजन विद स्प्लिटिंग देंगे तो आपका H2 मिलेगा. ठीक है. Second, if you have 2 degree alcohol and you are going to use copper, again at 573 Kelvin, and in this case you are going to get heat. For example, if I have something like this and which using hot copper at 573 Kelvin, I will get the 3 carbon acids and double bond between the second carbon. Third is 3 degree alcohol. Again, reacts with copper at 573 Kelvin. It will give you alcohol. Whether we यहाँ पे भी आपके पास H2 यहाँ पे alcohol कैसे होता है देखिए. 1, 2, 3 कार्बन एटम्स. यहाँ पे आपके पास OH है और एक और कार्बन एटम. ठीक है. This is 3 degree alcohol. I will react this with copper at 573 Kelvin. What will happen? This OH will be removed and one of the hydrogen from these carbon. See एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन. So water will be eliminated और आपको इस तरह का प्रोडक्ट alkene plus one. ठीक. इस टॉपिक के लिए जरा. Then we will look at the sequence of questions. जरा सवाल लिखेगा तो
All of these reactions are going to get repeated in the next chapter, that is aldehyde ketones and carboxylic acid. Since we are getting aldehydes and ketones, we will be writing this reaction in the method of preparation of aldehyde ketones. The raise your hand, student. Zaina Krishna, can you please turn your mic on? Zaina Krishna, can you please turn your mic on? Mic on करिए please. कुछ कुछ चीजें ना फैक्ट्स टाइप की चीजें उनको हम चाह रहे हैं कि आपको याद हो जाए, ठीक है? प्राइमरी अल्कोहल एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा प्रोडक्ट? As you can see ना, प्रोडक्ट तो कुछ ही चीजें हैं, देखिए रिएक्टिव तो अल्कोहल ही है, ठीक है? प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है? Either it will be an aldehyde, or it will be a ketone, or it will be a carboxylic acid. ठीक है? फोर्थ ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में जहाँ पे आपके पास एल्कीन है, ठीक है? चलिए आई एम सेइंग, अगर आपके पास है 1 डिग्री अल्कोहल एंड यू आर हैविंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कौन सा होगा? 1 2 3 4. ऋषिता, योर माइक इज नॉट ऑन. 1 2 3 4 में से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख के बताइए, आपको इधर उधर नहीं करना है, देख के बताइए ना. 1 डिग्री अल्कोहल एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? Aldehyde. अरे भाई देख के बताओ यार, देख के बताओ, देख के बताओ ना. वन डिग्री अल्कोहल और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग. सही लिखे. Carboxylic acid. हाँ, क्या है? आप लोगों को देख के सही से क्यों नहीं बताते एक बार में? लिखा हुआ है कि नहीं साइना? हाँ, टेल मी. Yes, sir. नो, इसका की देर माइक ऑफ यार, आप माइक ऑफ क्यों कर देते हो? आवाज पहुंच पाती है. जी बताइए, व्हाट वेरी सही. Uh, yes, sir. I wrote it down. That's what you asked, right? नहीं नहीं, आई एम नॉट इंक्लूडेड रॉन्ग. आई एम सेइंग कि देखिए यहाँ पे तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो एल्डिहाइड बन रहा है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बन रहा है? Ah, carboxylic acid. और क्या, हम तो गुस्सा हो गए ना, हम तो गुस्सा हो गए. आपने तो फिर आंसर दे दिया ना, और आप क्या कर? देख के बताना चाहिए था पहली बार में, है कि नहीं जैना? हम्म. Yes, sir. Good. हाँ. ओके रिश्ता, ध्यान देंगे अब. इस रिश्ता टूनी. Yes, sir. It's माइक माइक क्यों ऑफ हो जाता है? हाँ, माइक ऑफ क्या? वेरी मच. 1 डिग्री अल्कोहल और आपके पास है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब बताइए क्या होगा? aldehyde. Aldehyde. 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और आपके पास है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब क्या होगा? Ketone. हाँ, 2 डिग्री में कीटोन ही बनता है, ठीक है ना? ठीक है, आपके पास है Yes, 2 sir. डिग्री अल्कोहल, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है ना, बट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल. बहुत Yes, sir. रेयर केस में आपको ये मिलेगा, एकदम नहीं मिलता ही है. 2 डिग्री अल्कोहल आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं देते लोग, तो इसमें भी आपको कीटोन ही लिख देना, ठीक है ना, कीटोन ही बनेगा, ठीक है. बट अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है और आप क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे यू आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आप यहाँ पे ना हीट बीट कर दे रहे हैं, then what's going to happen? वही कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, है ना, and then you will get mixture of ketone and carboxylic acid, which is similar to which is similar to the case of 3 degree alcohol. 3 degree alcohol में भी अगर
हीट किया आपने तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने लगेगा, फिर मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनने लगेंगे। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? ठीक है। Yes, sir. हाँ, चलिए अब हम आपको कुछ और सवाल देते हैं, फिर उसका काम कर लीजिएगा। सवाल सवाल है, So can you major go products, ये लिखना है आपको, ये लिखना है, ये लिखा हुआ है ना, किसी को लिखिएगा। Yeah, okay, fine. So done. मुझे लिखा हुआ है। हाँ, चलिए, राइट द मेजर प्रोडक्ट, नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ना हर एक क्वेश्चन के बाद कंफर्म कर लीजिएगा सेम है या नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी सेम अनटिल अनलेस वी आर हीटिंग इट। हीट जनरली नहीं किया जाएगा, किसी भी सवाल में बोर्ड के आज तक हीट नहीं किया गया है। एग्जाम्पल्स में, एनसीईआरटी में कहीं पे भी हीट नहीं करते हैं। ठीक है, सो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट विल बी सेम, ये आपको ध्यान रखना है। राइट द मेजर प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पे आपके पास नंबर वन है इस तरह से कुछ OH, and you are treating this with suppose PCC। सेकंड में आपके पास मान लीजिए जिस तरह से 1 2 3 4 कार्बन एटम्स एंड CHO, CHO कहाँ से लगे, 4 कार्बन एटम्स एंड OH, and you are treating this with let us suppose PDC। थर्ड है आपके पास कुछ इस तरह से 1 2 3 कार्बन एटम्स और यहाँ पे है OH, and you are treating this with polystyrene। CrO3 लिख देते हैं, काफी हो जाता है polystyrene, ठीक है, पूरा लिखते नहीं है। CrO3 polystyrene, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से है OH, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है PC। फिफ्थ में आपके पास मान लीजिए कुछ इस तरह से, यार यहाँ OH और यहाँ पे आपके पास है OH, तो आपको दिया हुआ है क्या, PCC। ठीक है, अब एक दो स्ट्रॉन्ग वाला भी कर लेते हैं। सिक्स में आपके पास मान लीजिए कुछ इस तरह से, मतलब 4 कार्बन एटम्स OH और यहाँ पे KMnO4। सेवन में आपके पास है 1 2 3 4 5 H, यहाँ पे आपके पास K2Cr। ठीक है, 7 सवाल है, कौन सा पीछे कर देते हैं बताइए, दो दो बताइए, आई विल डू फॉर यू गाइस। ऋषिता ए और जायना ए बताइए जी। ऋषिता टेल मी व्हिच वन शुड आई डू, जल्दी बताइएगा, देख लीजिए आप, जल्दी मत बताइए, आराम से देख लीजिए सब। So the seventh one. 7, ठीक है। जायना Fourth. 4, So फोर्थ would वाला it 4। that's the same as the question we did before, 4 व्हाट इज 4? because we have to write the major product. अरे भाई मेजर प्रोडक्ट तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यही बोलेंगे, राइट द मेजर प्रोडक्ट। यू हैव टू लुक एट द रिएक्टेंट, यू हैव टू लुक एट द रिएजेंट एंड देन डिसाइड द प्रोडक्ट। बताते हैं आप, बताते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। पहले बस वाले माइक ऑन रखिए, ठीक है, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस और उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू डू दैट, ठीक है ना। तो रिचिता एंड जायना, फर्स्ट ऑफ ऑल सेवेंथ वाला रिचिता ने कहा था, टेल मी दिस पर्टिकुलर दिस इज एन अल्कोहल, यस और नो, Yes, sir. सही है। अच्छा कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्या है? 1 degree. 1 डिग्री। अच्छा और ये क्या है, K2Cr2O7, It, uh, क्या रिएजेंट है, क्या काम करता है, अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, तो बोलते हैं इसका नाम होता है ऐसे ऐसे रिएजेंट, क्या बोलते हैं इसको, K2Cr2O7, uh, वो oxidizing agent है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, करेक्ट है। हाँ, Yeah. स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, Uh, strong. तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, है ना, Yes, sir. विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या कहा हमने, व्हाट डिड आई से, Carboxylic acid with the same number of carbon atoms. हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन द क्वेश्चन, द रिएक्टेंट कितने कार्बन एटम्स, 4. 4 बनाया आपने, 1 2 3 4 और ये पे C, जाना, यू अंडरस्टूड, जायना जायना आपको समझ में आया, Yes, sir. रिश्ता ये तो आंसर, तो आपको तो समझ नहीं आया जायना, अब आप बताइए बोर्ड वाले का, ठीक है जायना।
फोर्थ वाले में बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्कोहल व्हाट डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री? सर फिफ्थ कीजिए। फिफ्थ करें? अरे भाई यस। इतना ज्यादा घबरा ही जाते हैं आप लोग। फिफ्थ वन इज अल्कोहल, ये सर, यस सर। है ना? बट यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये वाला क्या है आपके पास, दिस इज 2 डिग्री। ये वाला क्या है, 2 डिग्री, और ये वाला 1 डिग्री। 1 डिग्री। तो एंड व्हाट इज द रिएजेंट, स्ट्रॉन्ग है वीक है? तो पीडीसी देख के बता दे, कि बताओ ना, याद याद करके कुछ नहीं बताना, अभी एग्जाम में ना, देख के बताइए, नोट्स अभी आपको याद करने कहाँ पे क्या चीज। वीक ऑक्सीडाइजिंग। वीक, वीक है तो 2 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? 4 ऑप्शन है आपके पास, एल्डिहाइड में कीटोन, कीटोन के कार्बन लेकर किस में होगा 2 डिग्री वाला? कीटोन। कीटोन हमेशा ही कीटोन में होता है 2 डिग्री, ठीक है ना? कीटोन नहीं है तो, और 1 डिग्री किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे भाई मेरे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो एल्डिहाइड होता है ना। हम्म, जी, एल्डिहाइड। सॉरी। हाँ स्ट्रॉन्ग के लिए कार्बोक्सिलिक। हाँ, स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। अच्छा, अब ऐसा नहीं है ना कि एक मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड हो रहा है ऑक्सीडाइज, दूसरे मॉलिक्यूल में कीटोन ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों ही एक साथ ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, है ना? तो यू विल राइट एवरीथिंग एज इट इज, मीन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम्स। ये जहाँ पे 2 डिग्री वाला था वहां पे डबल बॉन्ड ओ कर देना है आपको, जहाँ पे 1 डिग्री वाला था वहां पे सी एच आ जाएगा। गॉट दिस, ये दोनों प्लीज मी जाएगा। यस सर। चलिए बाकी कीजिए आप, ठीक है।
बोल बोल लिखेगा ना, सिर्फ क्या है ये क्या नहीं है, सब बोल बोल। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स काउंट किया ना आपने रिश्ता? जी बताइए। Yes, sir. हाँ हाँ काउंट तो किया आप अपना फ्लो पे जाते हैं रिश्ता, एहतियात बरतिए आप, है ना, पहले ही काउंट कर लीजिए, सेकंड वाले में दिख रहा है बिल्कुल आपने, ओ अरे भाई क्या 5 कार्बन कर दिए हम। चलिए ठीक होता है, लेकिन यू नो दैट वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक्स, तब आपका ना मतलब इम्प्रूवमेंट अच्छे से हो सकता है। जैसे देखिए फिफ्थ वाले में हमने ही गलती कर दिया है क्या भाई? हाँ फिफ्थ वाले में तो हम ही गलती कर दी है। 6 नहीं 5 का ब्रांड है ना, 1 2 3 4 5, हाँ Yes. 6। Yes, sir. ये तो यहाँ पे होगा, देखिए चलिए। चलो आपसे भी हो गया एक बार, सिक्स वाला देखिए रिशिता, सिक्स वाला रिशिता देखिए। Yes, sir. I figured that out as soon as I sent the photo, and then I देन यू corrected रियलाइज, अच्छा corrected ठीक it. है नो प्रॉब्लम, बाकी सब ठीक है। नहीं, जायना ने भी भेजी है, जायना समझ में आया आपको, ये सुनो बिफोर सी एच ओ। Yes, sir. हाँ वो हमसे जो मिस्टेक हो गया था ना उसको करेक्ट कर लीजिएगा जरा, फिफ्थ वाले, ठीक है? ओके Yes, sir. जायना, Yes. 1 2 3 कार्बन क्या से 4 कार्बन, जी वेरी गुड, एवरीथिंग इज करेक्ट। ऐसे सवाल में मत चले जाइएगा आप लोग, राइट द मेजर प्रोडक्ट्स, तो इसमें भी वही चीज करना है जो पुराने वाले में करना है। You have to look at the reactant, you have to look at the reagent and then decide the product, okay, है ना?